Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in my YouTube channel Mathematics with Asnan. If you are new on my channel, then subscribe it and press the bell icon, and please like and share my video. Today we can discuss fluid mechanics practice MCQs. First MCQ है force per unit area of the surface on which it acts is stress. Option number C है the compressibility of fluid is measure of the change of its volume under the action of external force. MCQ number 3 है a fluid which is both inviscid and incompressible is called ideal fluid. MCQ number 4 है in laminar flow the fluid particle moves along straight path. MCQ number 5 है a stream tube of infinitesimal cross section is called stream filament. MCQ number 6 है xi equal to del cross v is vorticity vector. xi represent the vorticity vector. MCQ number 7 है gamma is equal to integral v dot dr is circulation. MCQ number 8 है for steady flow partial p over partial t is equal to 0. इसको रो भी पढ़ते हैं partial रो over partial t. MCQ number 9 half v square plus up to so on equal to c is equation for steady in viscous flow. तो ये जो है बर्नौली है इक्वेशन. MCQ नंबर 9 जो है इसका ऑप्शन डी है बर्नौली इक्वेशन. MCQ नंबर 10 है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेल डॉट वी इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी dv. इसका ऑप्शन जो है वो 0 है. डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0. इसके बाद MCQ नंबर 11 है द फ्लूइड मोशन इन विच द स्ट्रीम लाइन्स आर concentric circle is known as vortex. MCQ नंबर 12 है एलर इक्वेशन इज वैलिड फॉर. ये कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल बोथ के लिए जो है वैलिड होती है. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.